Hey everyone, this is Educated Himalaya again. Welcome to the chapter 5 of class 6 geography, major domains of the earth. Now, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because of the combination of land, water and air present. Now, जो अर्थ का जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पर तीनों कंपोनेंट एनवायरनमेंट के मीट करते हैं. Like the solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere and the gaseous layer जो हमें सराउंड करती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इस गैसियस लेयर में हर तरह की गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यू नेम इट. वाटर covers a very big area of the earth's surface and this area is called hydrosphere. Now hydrosphere comprise करता है हर तरह का water, चाहे वो ice में है, water है, water vapor में है. Now ये जो combination है इन तीन सब चीजों का उसको हम बोलते हैं biosphere. Now what is a biosphere? It is actually a narrow zone where we find land, water and air together. Now it contains all form of life because it has all ingredients like land is there, water is there and air is there. Now what is a lithosphere? Now we already know that solid portion of the earth's surface is called lithosphere. It comprises the rocks of the earth's crust and thin layers of soil. वो soil जो सारे के सारे nutrients contain करती है जो एक organism को चाहिए होते हैं sustain करने के. Now we already know that the large land masses are known as the continents and huge water bodies are known as the ocean basins. Now all the oceans of the world are interconnected somehow and the level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from लेवल ऑफ सी. नाउ जो सी का लेवल है उसको हम हमेशा जीरो लेते हैं और उसके कंपैरिजन में जितनी भी हाइट है दैट इज द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. Now let us have a look at the continents. Now we all know that there are 7 major continents. These are separated by large water bodies. अब ये continents है कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं यू विल नोटिस अ पर्टिकुलर थिंग दैट ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड must lies in the northern hemisphere. जो northern hemisphere है उसमें ज़्यादा land है. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the area of the earth. The continent lies entirely in eastern hemisphere and Tropic of Cancer passes through this continent. Let's also talk about Asia and Europe. They are separated by Ural Mountains and the combination of Europe and Asia is known as Eurasia. Now the second most important continent is Europe. It is much smaller than Asia. It lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it and it is bound by water bodies on 3 sides. Now let us talk about Africa. Now Africa is the second largest continent after Asia. Now the equator जो 0 डिग्री है वो इससे पास थ्रू करती है. ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों की तीनों लाइन इस कॉन्टिनेंट होकर पास करती है और ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों की तीनों लाइन पास होती है. एंड द अदर वन इज द सहारा डेजर्ट. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका. द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सीज and it also has world's longest river जिसका नाम है Nile. It flows through Africa. Now North America is the third largest continent of the world. But interesting to know is कि North America और South America को एक narrow strip है land की जो जोड़ती है उसको Isthmus of Panama बोलते हैं. It is a very important question कि North America और South America को कौन आपस में जोड़ता है. And this continent lies completely in northern and western hemisphere. Now South America. South America का majority जो land mass है वो southern hemisphere में है और South America के दोनों साइड different oceans हैं. इसकी western side में Pacific Ocean और eastern side पे Atlantic. But what is very important in southern hemisphere and the South America is the Andes mountain range. It is one of the longest mountain range which runs through its north to south. And South America also has the largest river in the world जिसका नाम है Amazon, जिसका majority of portion जो है वो ब्राजील में फ्लो करता है. The other continent is Australia. It is the smallest continent and it lies entirely in southern hemisphere. And which is very important about Australia is that it is surrounded on all sides by the ocean और उसी वजह से इसको एक island continent भी बोला जाता है. The last continent is Antarctica. It lies completely in southern hemisphere and it is a huge continent. Which is very important about Antarctica is the south pole. It
lies almost at the center of this continent. Because ये बहुत ज़्यादा polar वाले region में है, तो it is always covered with a thick cover of ice sheet and there are no permanent human settlements. But the most important question जो अंटार्कटिका वाले कॉन्टिनेंट में है, it is the research station कि इंडिया ने भी बहुत सारे अपने रिसर्च स्टेशन वहां पर लगाए हैं, तो उनमें से दो इंपॉर्टेंट है, वन इज मैत्री एंड अदर इज दक्षिण गंगोत्री. नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन इज हाइड्रोस्फीयर. नाउ हाइड्रोस्फीयर इज वेरी इंटरेस्टिंग. If I talk about other planets, it has lithosphere and it has एटमॉस्फेयर. हाँ, एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन जो है गैसेस की वो डिफरेंट हो सकती है, बट हाइड्रोस्फीयर इज लैक्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द प्लैनेट्स दैट वी नो. नाउ अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. नाउ जो अर्थ की वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से. नाउ उससे पहले हम बात कर देते हैं कि अर्थ का जो 71% जो पोर्शन है दैट इज वाटर एंड 29% इज द लैंड. नाउ जो हाइड्रोस्फीयर है वो किस तरह का पानी कंटेन करता है. नाउ इट कंटेन्स ऑल द फॉर्म्स लाइक ओशन, रिवर्स, लेक, आइस जो ग्लेशियर्स में है वो भी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है, अंडरग्राउंड वाटर, द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, they all comprise the hydrosphere. Now this water, more than 97% of the earth water is salty, which we cannot use, and a large proportion of this rest of the water, which is 3%, is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground. So a very small percentage of water is available for human consumption. So despite of the fact that we are a blue planet, we have almost, when we are talking about hydrosphere, it is necessary that we talk about oceans. Now oceans are the major part of hydrosphere and they are all interconnected. Ocean water is always moving. Three chief movements ocean water are the waves, the tides and the ocean currents. There are 5 major oceans. The names are, first one is Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and Southern Ocean and the Arctic Ocean. Let us talk about the Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. Mariana Trench जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन से ओशन में लाई करता है? The answer is Pacific Ocean. The Pacific Ocean का जो शेप है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो किस तरह के शेप में? It is almost circular shape. Now the second ocean that we are going to talk about is Atlantic Ocean. It is the second largest ocean and which is very important about is the shape. The shape of Atlantic Ocean is S-shape and it is flanked by North and South America on the western side, Europe and Africa on the eastern side. But important thing is कि इसकी जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है. ये जो आप मैप में देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो इस इंडेंटेड कोस्ट लाइन का क्या फायदा है, ये आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करती है नेचुरल हार्बर के लिए. तो इंडेंटेड बोल सकते हैं या इरेगुलर कोस्ट लाइन बोल सकते हैं. द थर्ड वन इज द इंडियन ओशन. ये एकमात्र ऐसा ओशन है विच इज नेम्ड आफ्टर the country, which is India. The shape of this ocean is almost triangular. In north it is bounded by Asia, in west by Africa and in east by Australia. उसके बाद बात करते हैं Southern Ocean की. It encircles the continent of Antarctica. Antarctica के चारों ओर जो ओशन है उसको हम Southern Ocean बोलते हैं and extends northwards to 60 degrees of south latitude. The last one is the Arctic Ocean. It is located within the Arctic Circle and surrounded by the obvious North Pole, and it is connected to the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water जिसको हम बोलते हैं Bering Strait. So it is a very important question कि Arctic Ocean और Pacific Ocean को कौन सी वाटर बॉडी है जो जोड़ती हैं, तो उसका नाम है Bering Strait. It is bounded by northern coast of North America and Eurasia. Now what is atmosphere? The earth is surrounded by a layer of gases which is known as the atmosphere. मतलब जितनी भी हवा अर्थ को सराउंड कर रही है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं और ये बहुत इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे प्लेनेट का. तो एटमॉस्फेयर हमें क्या देता है? पहले तो जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एयर, तो वो हमें देता है एटमॉस्फेयर. और दूसरी बात, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है. उसको हमने 5 मेजर जोन्स में डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज. Now these layers are, first one is troposphere, the second is stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Now let us look at the composition. Now earth is
mostly composed by nitrogen and oxygen. It makes about 99% of clean dry air. Nitrogen is 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास, और उसके अलावा जो 1% है इसमें बहुत सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, एंड वी ऑल नो व्हाई ऑक्सीजन इज important for us because we breathe oxygen. Nitrogen, it helps in growth of living organisms. Carbon dioxide बहुत कम मात्रा में है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्लेनेट को गर्म रखने में हेल्प करती है थ्रू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस. नाउ द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वो भी वेरी करती है हाइट के साथ. जैसे जैसे आप अर्थ से सी लेवल से ऊपर की ओर जाना शुरू करते हो तो डेंसिटी भी एटमॉस्फेयर की कम. तो वी नो के जो क्लाइंबर्स बहुत ऊंची ऊंची चोटीज में या ट्रैकर्स ट्रैक करते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की. एंड अदर पार्ट इज द टेम्परेचर. इट ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स. द एटमॉस्फेयर exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. So air moves from high pressure to low pressure. Always remember this. Air moves from high pressure to low pressure. और जो moving air है उसको हम wind बोलते हैं. Now let us think in this way. If you only have atmosphere, life is not possible. If you only have lithosphere, life is not possible. And if you have only hydrosphere, life will not be possible. It is the combination of all these three factors which happens to be the most important. So it is the narrow zone of contact between the land, water and the air. और इस zone में ही life जो है exist करती है. It is known as the biosphere.